संगम नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। शूरामेरयमद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समाधियामि। साधु साधु साधु। बुद्ध पूजा। वनगंध गुणोपेत एतं कुसुम संतति पूजयामि। मुनिर्दस्स श्रीपाद सरोरुहे पूजयामि। बुद्धं कुसुमेन नेन कुय्येन मेतेन लभामि मोक्ष। उपमिलायति यथा इन्द्रमे कायो तथा याति विनाशभाव। घनसारपदितेन दीपेन तं दस्सिना त्रिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि। तमोनुद सुगन्धिकाय वदन अनन्तगुणगन्धिन सुगन्धिना नन्देन पूजयामि। तथागत बुद्धधम्माच संग सुगततनुभव। धातो धातुकव्ये लङ्काय जम्बुदीपे तिदशपुरवरे नागलोके च लोके सभ्यबुद्धस्य बिम्बे सकलदशदिशे केशलोमादिधातु वन्दे। सर्वेऽपि बुद्धं दशवरतनूज बोधिचेते नमामि। वन्दामि चेते सप्पठाणे सोपतिगीत। शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा। सकलविद्या इदुर्यानं देवरूपं सुजीव। विमलचक्षु गभीरघोष घोरवर्णं सुखाय। अभयचित्तये निभयकाम सुरतधम्मं सुपेम। विरतरज्य सुजननयनं भीमरावं सरामि। भीमरावं सरामि।
भीमरावं सरामि दिव्य प्रभरत्नतु साधुवरदानतु आद्यकुलभूषतु भीमराजा सकल विद्यापति ज्ञान सत्संगति शास्त्र शासनमति बुद्धि तेजा पंकजा नरवरा रतन सुजन उद्धरा भगवंत मुचा खरा भक्त काजा चौदार संगरी शास्त्र धरिता करी कापला हरे उरी रुद्र रूपा मुक्ती पद कोणता जिन स्मृती दायता उदरल्या अगंतिका मार्ग साजा राष्ट्र घटना कृती शोभते भारती महामानव बोलती सार्थ सज्ञा शरण बुद्धास शरण धम्मास शरण संघास मी भीमराया संपूर्ण विश्वाला ज्यांनी सुख शांती मानवता तथा दुःख मुक्तीचा आर्य संदेश दिला असे ते दुःख मुक्तीचे मार्गदाता दुःख मुक्ती महामानव महाकारुणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत आपल्या शुद्ध पद्धतीने निर्मिलेला सद्धम्म अहोरात्र प्रचार आणि प्रचार करणारा पूजनीय भिक्खू संघ आणि अशा सर्व स्त्री रत्नांना प्रथमतः मी त्रिवार अभिवादन करतो. ज्यांच्या महान आणि असीम त्याग प्रवाहामुळे आपल्याला जो हा अनमोल असा बुद्ध धर्म लाभला आणि ज्यांच्यामुळे आपल्याला हे एवढे मोठे वैभव प्राप्त झाले असे युग प्रवर्तक भारतीय राज्यघटनेचे एकमेव शिल्पकार ईश्वरत्न परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाच्या अशा धम्मक्रांतीमुळे संपूर्ण जीवनाला समर्पित करून आज महामंगलाय आषाढ पौर्णिमेच्या वर्षावाच्या निमित्ताने आपल्या पंचशील विचारवंत बुद्धविहारात बुद्ध आणि त्यांचा धम्मग्रंथ वाचनाला 83 दिवसाला प्रारंभ होत आहे. तरी या ठिकाणी